Hello and welcome to the online study classes, students. Today we will do the question answers of A Triumph of Surgery class 10th, and the book name is Footprint Without Feet. Students, firstly we do the question answers and after that we will do the word meaning of this chapter. Okay, students? Take out your copies and start writing. A triumph of surgery. A triumph of surgery. Okay, page number. Chapter 1. Page number 6. Think about it. Okay. Question number 1. What kind of a person do you think the narrator? A veterinary surgeon is would you say he is tactful as well as full of common sense? What kind of a person do you think the narrator, a veterinary surgeon, is? Would you say he is tactful as well as full of common sense? आपको क्या लगता है जो नैरेटर थे मिस्टर हैरियट, जो कि एक वेटरनरी सर्जन भी थे, वो किस टाइप के या किस तरह के व्यक्ति थे? क्या आप कह सकते हो कि वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा विनम्र और बहुत ही ज़्यादा उनमें समझ थी? क्या आप कह सकते हो? स्टार्ट राइटिंग आंसर. आंसर नंबर 1. The narrator, a veterinary surgeon, is a capable and wise doctor
He handles he handles tricky properly, which shows that he is sincere about his profession. Next line, he does not operate upon the dog unnecessarily and cures him by altering his diet and activities. Next line, he is a tactful as he knew exactly how to convince Mrs. Pumphrey to hospitalize Tricky for a surgery. His decision to inform Mrs. Pumphrey to next page, to collect Tricky supports his
sensibilities even though he was tempted to keep tricky as a permanent guest. Okay, answer is the narrator, a veterinary surgeon, is a capable and wise doctor. He handles tricky properly, which shows that he is sincere about his profession. He does not operate upon the dog unnecessarily and cures him by altering his diet and activities. He is a tactful, as he knew exactly how to convince Mrs. Pumphrey to hospitalize Tricky for a surgery. His advice to inform Mrs. Pumphrey to collect Tricky supports his sensibility even though he was tempted to keep Tricky as a permanent guest. ठीक है, जो नरेटर है एक वेटनरी मीन्स होता है जो जानवरों का इलाज करता है. ठीक है, एक वेटनरी सर्जन है और बहुत ही ज़्यादा सक्षम और बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान चिकित्सक है, डॉक्टर है. और उसने ट्रिकी को बहुत ही अच्छे ढंग से संभाला, जो ये दिखाता है कि जो मिस्टर हैरियट है वो बहुत ज़्यादा अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत ज़्यादा ईमानदार है. और उन्होंने ट्रिकी पर कोई भी ऑपरेशन नहीं किया, मतलब बिना किसी फालतू का कोई भी ऑपरेशन उस पर नहीं किया. बस क्या किया, उसकी जो डाइट थी, उसकी जो एक्टिविटीज़ थी, उसको सिर्फ उन्होंने ऑल्टर किया, बदला. ठीक है, और वो बहुत ही ज़्यादा विनम्र व्यक्ति हैं. जब जैसे ही उन्हें पता चला कि जो ट्रिकी है बहुत ज़्यादा बीमार है, तो उन्होंने मिसेस पम्फ्री को कन्विंस किया, सहमत किया कि वो ट्रिकी को हॉस्पिटलाइज मीन्स अस्पताल में भर्ती करें. ठीक है, इनका जो ये डिसीज़न है, ठीक है, हिज डिसीज़न टू इन्फॉर्म मिसेस पम्फ्रे, वो ये दिखाता है. और उन्होंने जब मिसेस पम्फ्रे को मतलब बोला कि आप ट्रिकी को ले जाओ, तो ये दिखाता है कि जो मिस्टर हैरियट है बहुत ज़्यादा संवेदनशील है. सेंसिबिलिटी मतलब बहुत ही ज़्यादा संवेदनशीलता. ओके, और संवेदनशील है मतलब उनको, यद्यपि वो सोच रहे थे कि जो ट्रिकी है, मतलब उन्हें लालच आ गया था जब जो मिसेस पम्फ्रे थी उनको बहुत सारी चीज़ें ट्रिकी के लिए भेज रही थी ना वो, तो उससे उनको लालच आ गया था कि क्यों ना ट्रिकी को एज अ परमानेंट गेस्ट उनके हॉस्पिटल में उसको रख दिया जाए. लेकिन फिर भी उसने अपनी ड्यूटी करी पूरी और संवेदनशीलता दिखा के उन्होंने मिसेस पम्फ्री को कॉल करके कहा कि ट्रिकी को यहाँ से ले जाओ, वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया है. ओके, नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन. Do you think Tricky was happy to go home? What do you
think will happen now? Do you think Tricky was happy to go home? What do you think will happen now? ठीक है, क्या आपको लगता है ट्रिकी जब घर जा रहा था तो वो खुश था, और जब वो घर जाएगा तो तब क्या होगा? मतलब उसके घर जाने के बाद क्या होगा? ओके, राइट आंसर. Tricky was happy to go back home as he really loved his mistress and the comfort of his lavish life. He didn't have any friends at home like in the hospital, but he seemed equally excited at the sight of Mrs. Pumphrey. From next line, I think that Mrs. Pumphrey will be now more careful about Tricky's diet and health. She may also give him exercise daily as prescribed by the vet earlier. Okay,
Tricky was happy to go back home as he really loved his mistress and the comfort of his lavish life. He didn't have any friends at home like in the hospital, but he seemed equally excited at the sight of Mrs. Pumphrey. I think that Mrs. Pumphrey will be now more careful about Tricky's diet and health. She may also give him exercise daily as prescribed by the vet earlier. जो ट्रिकी था अपने घर वापस जाने के लिए बहुत ज़्यादा खुश था। वो अपनी मिस्ट्रेस को, अपनी मालकिन को बहुत ज़्यादा प्यार करता था और जो उसकी लेविश लाइफ थी, मीन्स बिल्कुल बहुत ठाटदार, मीन्स आराम से रहने वाली जो उसका जीवन था, उसको भी बहुत इन्जॉय करता था। ठीक है। और उसके हालांकि देखा जाए तो उसके कोई दोस्त घर पे नहीं थे, जैसे कि अस्पताल उस हॉस्पिटल में थे, लेकिन वो उतना ही एक्साइटेड था जितने की पम्फ्रे थी। ठीक है। और वो उसको देख के बहुत ज़्यादा उत्सुक हुआ। मुझे लगता है कि जो मिसेस पम्फ्रे है वो अब उसके प्रति बहुत ज़्यादा केयरफुल हो गई होगी, उसके ट्रिकी के डाइट के प्रति, उसके हेल्थ के प्रति। ठीक है। तो इसीलिए जो एक्सरसाइज वेटनरी डॉक्टर ने, उस सर्जन ने निर्धारित की थी, उसको प्रेस्क्राइब किया था पहले, वो उसके रिजीम में लाएगी, रूटीन में लाएगी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. Do you think this is a real life episode, or mere fiction, or is it a mixture of both? Okay. Do you think this is a real life episode or mere fiction, or is it a mixture of both? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आपको लगता है जो हमने स्टोरी पढ़ी या ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये एक असली ज़िंदगी पर आधारित घटना है या फिर सिर्फ एक परिकल्पना है या मिथ्या कथा है, या फिर दोनों का मिक्सचर है? ओके। आंसर, दिस story could be a mixture of both real life episode and fiction, and a fiction. The spoiling of the dog's health
dog's health by a rich mistress is believable and could also be a real life incident. The doctors advises also depict real life situation. However, the extremely speedy recovery of the dog could be fictitious. Also, the enjoyment of luxuries, eggs, wine, and brandy and brandy by the narrator could be termed as a real life episode, as there are people who would do so. At the end, the happiness of Mrs. Pumphrey on seeing her dog healthy seems to be a real life happening.
Therefore, the story is a mixture of both real life and fiction. Okay? This story could be a mixture of both real life episode and a fiction. The spoiling of the dog's health by a rich mistress is believable and could also be a real life incident. The doctor's advices also depict real life situation. However, the extremely speedy recovery of the dog could be fictitious. Also, the enjoyment of luxuries, eggs, wine, and brandy by the narrator could be termed as a real life episode, as there are people who would do so. At the end, the happiness of Mrs. Pumphrey on seeing her dog healthy seems to be a real life happening. Therefore, the story is a mixture of both real life and fiction. ठीक है, ये जो कहानी हमने पढ़ी या ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ये सच्ची घटना पर आधारित तथा कल्पना परिकल्पना या मिथ्या कथा है. ठीक है, जो उस डॉग की हेल्थ को उसकी बहुत ही अमीर मालकिन ने खराब कर दिया था, हम उसको सच मान सकते हैं और यह एक सच्ची घटना पर आधारित भी हो सकता है. और जो डॉक्टर ने सलाह दी थी कि मतलब आप इसको एक्सरसाइज कराओ, इसका मील चेंज करो, तो ये बिल्कुल रियल लाइफ सिचुएशन हो सकती है. लेकिन जो उसकी ट्रिकी की बहुत तेज़ी से जो रिकवरी हुई थी, सुधार हुआ था उसकी हेल्थ में, वो हम कह सकते हैं कि ये मिथ्या है. ठीक है, इतने जल्दी कोई भी डॉग रिकवर नहीं होता है. लेकिन जो उन्होंने मिसेस पम्फ्री द्वारा भेजी गई चीज़ों का आनंद उठाया था, एग्स, वाइन्स एंड ब्रांडी का, वो हम कह सकते हैं कि रियल लाइफ एपिसोड हो सकता है, क्योंकि ऐसा जनरली लोग करते हैं. अंत में जो मिसेस पम्फ्री की खुशी थी अपने डॉग को हेल्दी पाकर, हेल्दी देखकर, वो एक रियल लाइफ हैपनिंग, रियल लाइफ घटना हो सकती है. ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये जो कहानी हमने पढ़ी, ये दोनों रियल लाइफ और फिक्शन दोनों है. ओके, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ बोथ रियल लाइफ एंड fiction. Okay, students, thank you and have a good day.